ओके माय फ्रेंड, वेलकम 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 वंस अगेन। आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस लाइव टुडे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको जस्ट विजुलाइज कराना चाहता हूँ, या इमेजिन आप करो कि एक एक बहुत ही कॉमन सीन है कि दो बच्चे जो हैं वो भी एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, लुकिंग एट द सेम स्लाइड। अब जो पहला बच्चा है वो तो बहुत जल्दी से ऊपर चढ़ जाता है विद कॉन्फिडेंस एंड एक्साइटमेंट, जबकि जो दूसरा वाला है वो पीछे रह जाता है। ही हैंग्स बैक, फीलिंग अनश्योर एंड लुकिंग फॉर सपोर्ट। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स द डिफरेंस? व्हाट डू यू थिंक? इज इट all about the mindset or what? So today I am talking about mindset to raise confident children, and for that I'm actually thrilled to have our wonderful guest speaker Deepshikha Thapar with us. She is a life skill coach and she specializes in helping parents and teachers nurture strong, self-assured kids. And Deepshika has worked, with many families to build a positive mindset in children, giving them the tools to feel more confident in themselves and their abilities. तो दीपशिका जो है काफ़ी लोगों की हेल्प कर चुकी हैं, तो इससे ज़्यादा ये आपको बताएंगी इनके बारे में कि और क्या क्या करती हैं ये। सो जस्ट बी हेयर टिल द एंड and you will have an opportunity to ask your questions live in the session, and she will answer. Also, she will be talking to you for next 30 to 35 minutes, and then we will have a question and answer round where you can ask your questions. Okay, so without any delay, but just type welcome Deepshikha if you are excited about learning all these things. And as I said, Deepshikha will be talking to you for next 30 to 35 minutes, and then we'll have a question and answer round. So welcome Deepshikha, and over to Thank you. you. Thank you very much. So, guys, I've worked as a CSR consultant with companies like Bata and Schneider, and I've done a lot of social work with children, which makes me believe that it's very important to instill confidence in children. बच्चों का कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर ने अभी बताया कि दो बच्चे हैं, एक चल पाता है एक नहीं आगे चल पाता, तो रीज़न क्या है? इट्स कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस सिर्फ बच्चों का होना ज़रूरी नहीं है, कॉन्फिडेंट पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड, राइट? व्हेन आई लुक इन अ चाइल्ड, आई सी द पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। So adults need to learn how to trust their own abilities, their own capabilities, and know that they can handle if they don't achieve a goal, right? So the first and foremost thing जो पेरेंट्स में होनी चाहिए वो है सेल्फ लव। मदर में, फादर में, अगर चाइल्ड को कॉन्फिडेंट बनाना है, मदर में सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी चाइल्ड कॉन्फिडेंट होगा, राइट? और इट्स ओके, देयर आर सर्टेन लेडीज, देयर आर सर्टेन मैन हु आर नॉट सेल्फ, हु डोंट लव देमसेल्फ और हु आर नॉट कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर आप एक कॉन्फिडेंट फादर हैं और मदर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि उनको भी कॉन्फिडेंट करें, उनके अंदर भी सेल्फ लव लाएं, राइट? So it's very important. There's a very famous quote by Bryn Brown who says that you cannot give your child what you do not have, राइट? सो बच्चे को बोलना यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आप तो क्लास में कुछ नहीं बोलते हो, आप तो कहीं बाहर जाते हो पार्टी में कुछ नहीं बोलते हो, लेट्स लुक एट द पेरेंट्स, आर दे स्पीकिंग, आर दे बिकॉज बच्चे जो है वो मॉडल करेंगे जो आप कर रहे हो, राइट? टू टीच चिल्ड्रन यू शुड नीड टू डेमोन्स्ट्रेट इट, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नो डिफरेंट, राइट? हम ऐसा कर सकते हैं कि सेलिब्रेट योर सक्सेस विद किड्स। जब आपकी कोई भी ऑफिस में कुछ आपको कुछ भी इंक्रीमेंट मिलता है, सेलिब्रेट विद योर किड्स, टॉक अबाउट योर गोल्स, शो देम हाउ हार्ड वर्क you have done. If a mother is housewife, she can tell how
how she's cooking, how she didn't know how to cook a certain dish, and then how she's working on herself and learning how to cook well. And determination really helps here, right? Another important thing is stop controlling and start coaching. Okay, so what's the difference? See, coaches help kids develop skills, right? And they step aside and let kids actually play the game. But you have to be a coach, not a player. Your job as a parent is to support your child so that he can flourish and develop, right? And doing सब कुछ आप उन्हें करके दे रहे हैं. If they have school tomorrow, they have to uh, make some kind of drawing or some kind of project. You are doing it for them. I know parents who do it for them. That's not done. That's not the way. ऐसे बच्चा confident नहीं होगा. Doing things for them all the time will rob them of the opportunity to become competent, right? Doing things with your child teaches them and builds confidence. Do it with them or let them do it, right? This means to raise confident child, we have to manage our own anxiety and let go of our need to control. If they have exam, I know mothers who get exam aane wale and they get so anxious. No, for them to be confident to take up a exam, to be good at exam, आपको अपने अपने एंजाइटी पे काम करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है. Another important thing is encourage with a capital in E. In first of all, encourage yourself, right? All human beings need encouragement, and encouraging your child not only helps them feel more positive and motivated, it also develops a positive inner voice that will encourage them for the rest of their life, right? So give your child mantras to repeat. They are called affirmations. And if you think that you need an affirmation, please go for it. It's okay. There's no age to learn, there's no age to do good things. So something like practice makes progress. Or if you don't succeed, try again. Maybe when you're talking to them in the morning, if the child is छोटा बच्चा है तो पोएम के हिसाब से, थोड़ा बड़ा बच्चा है तो सॉन्ग के हिसाब से, अगर और थोड़ा बड़ा बच्चा है, ही इज अ टीनेजर, शी इज अ टीनेजर, सो पुट अ पोस्टर or do something, right? So phrases like this are help them to manage frustration. And to be confident child, you need to be, as I tell you, be a confident parent. You need an automatic internal comforting voice that helps encourage and motivate there when you fall, right? Otherwise harsh criticizing self talk might prompt you to quit and quit your child also. We keep on criticizing, I am not a good parent, it's okay, there's no manual for parents. That's what I tell all the mothers, all the people that I know. कुछ भी मैनुअल हमें नहीं मिला है कि हमें वो बताए कि ऐसे आपको अच्छा पेरेंट बनना है. कोई मैनुअल बच्चे के लिए भी नहीं है कि ये वाला चाइल्ड परफेक्ट है, राइट? दैट योर चाइल्ड माइट बी गेटिंग 99% and he doesn't know how to talk, he doesn't know, he's like very shy, it happens. And your child could be speaks well and then he's not doing well in exams, right? But सेल्फ टॉक जो होगी आपकी और आपके बच्चों की, बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ एंड लेट, इफ चाइल्ड इज डूइंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक, प्लीज स्टॉप दैट. टेल हिम टू स्टॉप दैट, राइट? Talk positively with your child. That is very important, right? Whenever your child is within earshot, be sure you're talking positively about them to family and friends. हम अपने, अब हम बहुत easy होता है, नानी के घर गए हैं, दादी की तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही करती है, ये तो कहीं बोलती नहीं है, ये तो चुप रहती है. No, save the complaining and ear rolling when your kids are around. Talking negatively about children, especially to others, results in embarrassment and shame, which can damage your self confidence and the child's self confidence as well, right? So, this is very, very important mindset for parents to have, is to talk positively about your child. Another important thing is give your child some responsibility. See, everyone wants to feel needed. सबको चाहिए कि मेरे को इंक्लूडिंग चिल्ड्रन की कुछ 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 हमें इम्पोर्टेंस मिले. सब चाहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस मिले. एंड किड्स वांट टू हेल्प आउट, दे एक्चुअली वांट टू हेल्प आउट एंड contribute in the family. So let them do that. If they want to wash utensils on certain day, that's absolutely fine. Assign age
appropriate course to teach your kids the value of responsibility. I know in my house there are children who are just putting clothes in the for washing. They put the clothes in the machine. That's the only thing they're doing, and that's absolutely fine. When somebody comes home, they give uh, like water to the guest, and that's okay. A 7 year and 8 year old child can do that. This also helps your child develop self confidence by showing them that they can complete a job and do it well. But for that, you have to have that mindset. You have to give your child responsibility, right? Because हम लोग सोचते सब काम मैं ही कर लेता हूँ, let me do everything, let me do all the things. कोई आया है, हम सुबह से लेके शाम तक, oh, I do so much work. I don't know why do mothers or even fathers want to do that. जितना वो कर सकते हैं, which is safe for them to do. If it's cooking, it can be no gas cooking, something like that. Another important thing is use descriptive praise. Yes, no. See, praise can be an extremely effective way to boost confidence. And if done the right way, trust me, kids know when you are just going through the motions, right? If you have half-hearted good job, nice work, good job, बच्चों को क्या समझ नहीं आता है, आपको और मुझे समझ में आता है, बच्चों को भी समझ में आता है. So when scrolling through your, आप फोन को देखते देखते उनसे बात कर रहे हैं, no, that's not the way. You need to have eye contact. And आई कांटेक्ट और ये सब सिर्फ जॉब में इंटरव्यू देने के लिए नहीं होते, घर में भी जरूरी है. सो यू किड्स नो वेल that you're not paying attention, and they won't feel supported, right? If you don't do that eye contact and encourage to continue whatever good behavior they are doing, right? So it's very important कि आप उनकी आंखों में आके आके कुछ डिस्क्रिप्टिव बताइए, आपने जो ये किया, इससे ये हुआ, something more than this nice work, and using few sentences with them. Don't minimize feelings. You want your child to be able to experience difficult emotions like frustration, sadness, anger, or overwhelm. So not let these feelings impact their self-worth. ये तो लड़का है, लड़के रोते नहीं हैं. क्यों नहीं रोते लड़के? लड़के रो सकते हैं, it's okay. So dismissing a child's feeling can make them think they're unimportant, which lowers self-esteem. Let them cry, let them feel frustrated, let them get angry, but teach them this is how to manage it, right? Don't tell them to stop feeling an emotion. Yeah, you want your kids to be able to talk about manage big emotions without it eroding their confidence. Show interest. आपको इनफैक्ट इंटरेस्ट शो करना चाहिए. When your child wants to talk about the feeling, listen to what they have to say. Even if they want to get angry, let them get angry. I know parents की who up me, like my daughter gets angry, and I know, my friends are like, oh god, ये ऐसे बोलती है. It's okay, she's a human being. But then if I tell her, okay, this is what you have to do when you get angry, this is what you have to do when you sad, this is what you have to do when you frustrate. Emotions are okay, right? And let them do that, let them feel that, but they should know how to manage it. Another important thing is create attainable goals, and that's a very important mindset which parents should have. Children who feel a sense of accomplishment are building self-esteem, right? So boost your child confidence by setting attainable goals, simple goals. It could be simple as getting themselves dressed up in the morning, or practice a small whatever they want to learn, badminton, or for 5 minutes, 10 minutes. So then offer specific praise when that is completed, and these mini goals become confidence building activities for kids. We need not talk about therapies कि एक दिन कुछ होगा और वो बच्चा no, let's have mini goals, and child will become confident, and your child will feel a sense of accomplishment by छोटी छोटी चीजें करने से, right? Which helps them build their trust in their own abilities, right? Confidence is not about writing a book, going for a TEDx, uh,
my child has done a robotic course, my child has done this. No, it can be as simple as my child gets up in the morning and dresses up himself. Don't why we have to, have big goals. Let's start with mini goals. Don't rush to rescue, right? हमें जैसे ही कुछ, oh god, let me handle this, let me, parents, mothers, fathers are there, just वो जल्दी से रेस्क्यू करना चाहते हैं, कुछ उनको कुछ हो ना कभी. No. See, it's natural to want to prevent your child from getting hurt, making mistakes, being discouraged. But if you step in and try to make things right all the time, your child never gets to learn the valuable lessons of resilience and grit. Encourage a growth mindset in your kids. Let them learn how to handle challenges by figuring out ways to overcome obstacles themselves. Show them that it's okay to make mistakes. Start over by letting them see, you mess up and you give up the result. This is how a confident child is more born. So there's so much told about that we need to make child confident. मेरा बच्चा confident नहीं है, बच्चा confident नहीं बनेगा जब तक आप छोड़ेंगे नहीं उसको, उसकी battles खुद खुद हैंडल करने नहीं देंगे, राइट? हर बार रेस्क्यू करने नहीं जाएंगे उसको. अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमेशा उसके पास नहीं खड़े रहेंगे. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. My daughter was playing a badminton, she was playing basketball, and she got hurt, right? One of the child hurt her, and then she fell ill. She even got some, उसको दर्द, खून भी निकल रहा था. So she came to me, nahi, she called me, Mama, I got this, I got that. I went to school because I was a little worried. And she said, I want to go again and play. I said, go and play again. It's okay. ऐसे ही बच्चे सीखते हैं, ये नहीं ओ मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा. नो, व्हेन दे गो इन द जॉब मार्केट, nobody is there to help them out. उनको अपनी बैटल खुद करनी है, तो अभी से उनको सिखाना पड़ेगा, और ऐसे ही ऐसे ही वो कॉन्फिडेंट बनेंगे, राइट? Encourage problem solving. That's extremely important. Children often run straight to mom and dad when faced with a problem. And if you solve it for them, you're depriving your child of a valuable learning opportunity, right? It can be small, it can be big thing. I learned somewhere, one of the very good authors said this, that kids are confident when they're able to negotiate getting what they want, राइट? लेट देम नेगोशिएट. कुछ जिस चीज पे हाथ रखे वो लेके मत दीजिए, राइट? रिसर्च शोज दैट इवन young kids can learn to solve simple problems by themselves. Don't give them all the answers. Let them encourage your kids to come up with a solution on their own. Their first response may not be the best solution, but you can gently redirect by asking questions until they get to a better answer, right? And this is how children will learn how to think through problems on their own. And child who learn to trust their own judgment will become a confident child. Seriously, I'm telling you, as a child, I know a lot of my friends जो स्कूल में बहुत अच्छे दिखते थे, बिकॉज दे हैड वेरी गुड पेरेंट्स हु वर जस्ट टेलिंग देम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. As a child, they were getting very good marks, you know uh, teachers were praising them a lot. But as they grow up, I'm sorry, but they still don't know what to do, because parents are not there with us all the time. And they'll not be there forever, isn't it? So let them make their own judgment, right? Let them see what is right, what is wrong. Let them do that. Okay, this is extremely important, so that your child becomes a confident child, right? Gain an understanding of your own child fears. आपके बच्चे के किस चीज से उसे डर लगता है, and encourage more risk taking and follow through, which will, like, sometimes बच्चे ऐसे बोलते हैं, I won't be able to do it, I won't be good at it, they won't like me. you know Talking through and directly working on fears enforces you and your child's capability and capacity.
So sticking it through and sustaining momentum typically becomes a major obstacle that should be paid attention to, attended to, and continually worked on. Right? If your child is saying, "I won't be able to do it," no, tell them you can do it. It's okay. And that is the एटीट्यूड और माइंडसेट अ पेरेंट शुड हैव, क्योंकि कई बार हम ही बोल देते हैं ये तो नहीं कर पाएगा, तुमसे तो नहीं होगा। एंड आपको पता है ये एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है और बच्चा जिंदगी भर वो काम नहीं कर पाता। राइट? प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज डोंट से ये तो ऐसा ही है, ये तो नहीं कर सकता, इससे तो होगा ही नहीं। क्या सब कुछ सब लोग कर रहे हैं, राइट? और जो पेरेंट्स कहते हैं ना, जिनके बच्चे 50-60% भी लाते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरा बच्चा कुछ ना कुछ जरूर करेगा, उनके बच्चे कर जाते हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू हैव द राइट माइंडसेट so that they can do whatever they want, and that is how we will raise children uh, who will become confident, who will be good when they grow up, who will do well in their personal life, in their professional life, in their spiritual life, everywhere, right? uh, I'll just tell a few more things, like you should tell your children to ensure a positive environment, set realistic goals, encourage decision making, let them make their own decision, right? Being It can be small things like when they go to a mall, uh, let them choose their attire, let them choose their games. It can be small thing, praising effort and not just result. That is so important. रिजल्ट की 99% ओके, अगर आपके बच्चे ने डेली वो मैथ्स आधा घंटा 1 घंटा कर रहा है, यू कैन प्रेज दैट ऑल्सो। आपको सिर्फ 90% को ही प्रेज नहीं करना है। फॉस्टर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैंने पहले भी जैसे बताया। Embrace failure as a learning opportunity. Cultivate a growth mindset. That's extremely important. Promote healthy risk taking. Instill effective communication skills, which is not just speaking but listening also, expressing as well, which is like respectful as well, and teaching problem solving skills. Engage in physical activity. That's extremely important, because फिजिकल हेल्थ जो आप एक्टिविटीज करते हैं वो टीम वर्क, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें सिखाता है। कल्टिवेट अ लव फॉर रीडिंग। रीडिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो फॉस्टर करता है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को। सो उसके लिए ऑफ कोर्स यू शुड हैव माइंडसेट टू रीड। अगर नहीं पढ़ना पसंद, फिर भी कभी कभी बैठ जाए बुक लेके, रीड समथिंग, एंड सो दैट योर चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स, राइट? Promote empathy and kindness. You should be empathetic with your people at home, the workers at home. You should be kind, and then only child will learn, right? Encourage volunteer. Go for some volunteer work, and when you go for volunteer work, your child will also go for volunteer work. So you can do some fun activities. You can do a superhero challenge and discover hidden paths. ऐसे करके कुछ activity कर सकते हैं। DIY साइंस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डू अ टैलेंट शो एट योर होम, कल्चरल क्विजिंग डे कर सकते हैं, राइट? और आई कैन डू इट jar, right? Celebrate achievement, as I told you earlier. Create I can do it jar with your child. Fill it with colorful notes, each highlighting an achievement or positive trait of your child, and whenever they accomplish something or display a commendable attitude, add a slip to the jar, right? So these are the things that you can do. And of course it's very important to have a right mindset uh, to raise a child. As I told you that there is never a manual किसी के पास भी नहीं है, but of course there are certain things that we can do, which is like continue being a good role model as much as you can. इट्स ओके, आपको आप गुस्सा भी कर सकते हैं। आई नो पेरेंट्स हु कभी मैं कभी बच्चों के सामने गुस्सा नहीं करता। नो, आपको बच्चों के सामने गुस्सा करना है, देन यू हैव टू see how you're managing them, right? And if you always reluctant to start new things, put yourself out there, take risk, तो child ऐसे ही observe करेगा और mimic करेगा। uh, ऐसे ही वो देखेगा कि कैसे आप कॉशियस होते हो, हेजिटेंट होते हो, और फिर आप एक काम करते हो, right? And improving your child confidence is a continual work in progress,
राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चाइल्ड कॉन्फिडेंट होके नहीं आता है, राइट? It's work in progress, and you keep on working on the child, and that is how a child will become confident. Know and learn about your and your child टेम्परामेंट एंड चैलेंजेस, कि आपके टेम्परामेंट कैसा है और चाइल्ड का टेम्परामेंट कैसा है, आपके चैलेंजेस क्या हैं, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए. सो ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड इफ योर चाइल्ड इज जनरली सोशली रिजर्व्ड, व्हेन दे अप्रोच अनदर चाइल्ड टू befriend them, make it a point to acknowledge and कि उस चीज को आप थोड़ा सा देखें, सोचें. एंड वट एवर पर्सनल चैलेंजिंग यू आर कन्फ्रंटेड और नो आई नो वर्किंग ऑन, गिव योर सेल्फ praise for leaning into challenges and acknowledging your willingness to act despite how challenging it is. And this will enforce self confidence, self love, self compassion, and desire to move forward and thrive. Be open to giving and receiving support. That is extremely important. Convey to children that being aware and the support is needed, is okay to ask for it, right? It's like I sometimes go out and I ask people what is the way. My daughter says, no, 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 don't ask anyone. I know why. We have to ask people, and that doesn't show your weakness, right? It in fact shows your strength, that you are making an attempt to dispel the perception, right? So it's okay, do certain things, right? And give direct feedback and to what you're proud of, rather than saying you did that. Try, when आप उनको एग्जांपल दीजिए कि जब आपने वो ओपन किया ना डोर फॉर दैट लेडी उस दिन, and you were holding that baby, and you were thoughtful and kind, your actions were really helpful, you made it possible for her to enter the building more easily. So give specific, by being direct and offering specific details, you know you're connecting specific actions that facilitate empowerment and confidence building characteristics. And for that you have to do with a mother or maybe grandparents, and then child will see that. And sometimes you can do with child also. And when applying this to yourself, be specific on what you value about your personal actions and what you strive to be more like and do more of, right? So these are the things I think I've spoken enough. And if you have any questions, you can ask me. Try to communicate a little more. Be aware of the messages that you are sending to yourself and your child, which is extremely important. And it's not just the your words, but through your body language also. Body language, as you know, is extremely important. So not it's not just what you speak, but how you're speaking to your child through the body language. That's extremely important. So try to facilitate an internal sense of pride as opposed to external acceptance, right? So this thing will really really help to become to have a confident child. And with this, I request you to ask me any questions that you want me to ask. I'll be more than happy to answer anything you want to know about boosting your child confident, or you want to amend. Another thing you can do is amend tasks so that they are achievable, right? For children, give tasks that are manageable and age appropriate, as I told earlier also, right? So no, say no, you can't because you're too little, please get off, हट जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगा, आप हट जाओ. That is what parents are doing. No, don't do that. Try communicate something like, good for you to trying at least try कर रहे हो, so this is good for you. So you can say that, and focus on effort, as I told earlier also. Focus on effort rather than results. And realistically in life, things often do not work out on the first try, isn't it? जब हम ऑफिस में भी जाते हैं, घर पे भी सब हर बार ऐसे नहीं होता है. We often must put a concerned effort into what we want and have to stick with it until we actually achieve effective results. And teaching children to note, take personal pride in the efforts, help them to acknowledge that feelings that go along with it, and then continue to forge on because of their self belief and desire to improve and achieve. And when opportunities arise, I'm sure try to model it for them as well with your personal experience, right? So keep on giving your personal stories. Stories are so important. I am just fan of stories. अपनी stories के through उनको बताइए छोटी छोटी चीजें
जो आपने अचीव करी हैं, अपने बारे में बताइए। आपने अपनी स्टोरीज, जो भी आपने गलत किया है लाइफ में, जो अच्छा किया है, वो आप बच्चों को बताइए। स्टोरीज कीप ऑन ऑफिस से घर जाते हुए एक स्टोरी बिल्डअप कीजिए और घर आके उनको एक ऐसी स्टोरी बताइए जब आप सब घर में सब एक साथ बैठे हों। टेल देम अबाउट सम स्टोरीज, बचपन की। आपने आपने कैसे आप कैसे थे और आपने ये काम कैसे किया। कन्वे दैट योर ह्यूमननेस डिक्टेट्स दैट वी आर ऑल फ्लॉड एंड मेक मिस्टेक्स. You don't it's important to be a good role model, but it's important to tell them that you're a little flawed as well, and making mistakes is like natural, and they have to make certain mistakes to move on in life, right? So, and keep on telling them that no one has the ability to make us feel any way about anything, right? ये सबसे important चीज है, बिकॉज बच्चे कई बार कुछ उनके फ्रेंड्स कहते हैं, या इवन फैमिली मेंबर्स कहते हैं, या टीचर्स भी कहते हैं, तो वो मान जाते हैं. सो योर चिल्ड्रन कैन लर्न. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू बिल्ड confidence by identifying what insecurities they're facing, and why and how it is being highlighted for them, which part of them they can look to work on and improve, right? So confidence is made. It is not something we are born with, and we can have a positive impact in facilitating our child self confidence. All we ever want for your children is the ability to see their self worth and strive to be the best they can be. And by using the things that I want, you can make fundamental personal changes which can help the child you love so dearly. So, if you have any questions now, you can ask me. I'll be happy to answer them. Are there any questions? Yeah, hi. First of all, thank you so much, Neha. Thank you so much, Deepshikha ji, for sharing your wonderful insight about Thank you. like how to create the mindset for confident children. Thank you. So wonderful insights here, friends. If you have any question, you can ask, and Deepshikha will answer your questions. Meanwhile, Deepshikha ji, I have some questions. Mhm. So the first question which I have got is like, what is the most important things required to raise a confident child? See, the most important thing is love your child. If you ask me, the most important thing is love them unconditionally. Love them even if they get less marks. Love them if they are not good enough. Love them. No child is, actually that's a wrong. I'm so sorry for using that word. It's not good enough. But आपको लगता है कि क्योंकि सोसाइटी की ऐसी एक वो है कि 90% आए तो तभी अच्छा है मेरा बच्चा अगर बैडमिंटन अच्छे से खेलता है तो ही अच्छा है बच्चा. नो, लव योर चाइल्ड. एटलीस्ट पेरेंट्स शुड लव देयर चाइल्ड अनकंडीशनली, क्योंकि पूरी दुनिया तो बैठी ही है कमी निकालने के लिए. तो आप प्लीज कमी मत निकालिए, सिर्फ अनकंडीशनल लव दीजिए उसको, सब टूल्स दीजिए जो भी उसको चाहिए, एंड देन लेट चाइल्ड हैव देयर ओन लाइफ एंड डेस्टिनी. Right. Wonderful. Thank you so much for the wonderful answer. And she rightly said कि देखो बच्चा तो आप ही का है, राइट? तो क्यों उसको इस तरह से बिहेव करना, क्यों ऐसा बिहेवियर क्रिएट करना उसके लिए? उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए तो शायद वो आपके लिए तो शायद रिस्पेक्ट कम ना करे, लेकिन अपने लिए सेल्फ लव जो है वो खत्म कर देगा उस केस में, राइट? राइट. क्योंकि बच्चे को अगर हम कह रहे हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, एंड दैट किड इज आल्सो एक्सेप्टिंग आई एम नॉट गुड इनफ. So wonderful. Thank you so much for the wonderful answer. And the second question which I've got is like, हम अपने बच्चों को सेल्फ लव कैसे सिखा सकते हैं बीइंग अ पेरेंट? देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे बच्चा सेल्फ लव सीखता है, विच इज सेलिब्रेट करें सक्सेस को, उसकी छोटी छोटी सक्सेस को. अपने गोल्स के बारे में बताइए एंड शो देम जो हार्डवर्क आपने किया है, डिटर्मिनेशन जो आपने दिखाई है. तो इन सब से चीज़ों से बच्चा सेल्फ लव, अपने आप को उसको ध्यान रखना है, अपने ग्रूमिंग का ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है,
तो ये सब चीजें हैं, और उससे पहले आपको मदर्स को अपना सेल्फ लव देखना है। अगर बच्चे के पास एक मदर या फादर रोल मॉडल्स हैं जो सेल्फ लव खुद कर रहे हैं, देखो आप ठीक है, you're डूइंग, आप पूरे दिन कुक कर रहे हो, पेरेंट्स सबके लिए करे जा रहे हो आप, वो देख रहा है मदर को कि मदर फिर खुद तो अपना ध्यान रख ही नहीं पा रही है, तो बच्चा भी अगर गर्ल है या बॉय है जो भी है, तो वो भी वही लगेगा कि मुझे बस ठीक है, इट्स गुड टू डू फॉर अदर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, but loving yourself is extremely important. The love a mother or a father, I mean it can be anything, I'm not like gender biased here. The love you're giving to others, you need to give to yourself, and when you are doing it, I'm sure child will also do it. तो लाइक अगर हमें बच्चे के अंदर हम उसको सेल्फ लव सिखाना चाहते हैं तो पहले हमारे अंदर होना चाहिए. Exactly. ओके, दैट्स नाइस. थैंक यू सो मच वंस अगेन. Hmm. तो आप कोई एग्जांपल के साथ बता सकते हो कि लाइक बीइंग अ कोच, हाउ Mhm. कैन दिस बी डन? See, मैंने जैसे पहले भी बोला कि आपको स्टॉप करना है कंट्रोल करना, और बच्चे को एक कोच के जैसे देखना है, राइट? उसकी कोचिंग करनी है, उसको बताना है कि ये सही है, सही गलत है, और डूइंग, यू हैव टू स्टॉप डूइंग थिंग्स फॉर देम, इट कैन बी एज सिंपल एज कि बच्चा जब स्कूल से आए तो उसकी ड्रेस वापस कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, वो बच्चा नहीं, लेट मी डू इट फॉर यू, बच्चे टेबल छोटा, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट चाइल्ड्स एज आल्सो, आई मीन ये नहीं कि आप 2 साल के बच्चे से बोले कि चलो चलो पूरा डाइनिंग टेबल साफ करो, बट आई एम श्योर 10 ईयर ओल्ड और 13 और 14 ईयर ओल्ड खाना खाने के बाद दे कैन, you can coach them, right, to clean the table, right? So the small things that children can do, coach them for small things, and then they become big things. वो बड़ी चीजें भी कर सकते हैं, I'm sure. When guests are coming, they can handle them. It depends कितना बच्चा कर पा रहा है, and accordingly you have to coach them instead of controlling. No, बच्चे पे अगर घर में relatives आए तो you don't have to speak anything. You just keep quiet. I know parents who do that, and that's not correct. Not at all. Stop controlling. Start coaching. So that's the mantra. Okay, thank you so much for the wonderful answer once again. And Parna ji, thank you so much for responding to this. You're absolutely right, Deepshika. So Thank Parna said this to you. So thank yes, you. that's right. Also, friends, once again, if you have any question, you can ask, and Deepshika is there to answer your question. Right? Thank Thank you so much. And with this, my next question is like, कई बार हम बच्चों के लिए नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, राइट? तो उन बच्चों के लिए हम जो नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो कैसे उनके कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर सकता है? See, I won't say कि नहीं करते पेरेंट्स, और ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने कभी नहीं किया। ये तो डेफिनेटली हैम्पर तो बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो वो बच्चों की, सिर्फ बच्चे जो फर्स्ट 6 ईयर 7 ईयर्स में जो सीखते हैं उनके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं और उनके लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं, राइट? सिंपल थिंग इज़ कि हम कई बार मनी को लेके भी कई चीज़ें बोल देते हैं, नहीं नहीं बेटा ये तो बहुत महंगा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, यू नो। कई बार मेरी बेटी भी बोल देती, मैं जैसे पेरेंट्स की आदत होती है, वी से दैट नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपके पास पैसे हैं क्या? मतलब शी स्टार्टेड आस्किंग, सो आई लाइक ओके, आई हैव टू चेंज माय दिस थिंग। सो इट्स ओके, हम लोग कई बार चीजें बोल देते हैं, बट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि कुछ भी हम नेगेटिव ना बोलें, एंड इवन इफ इट्स देयर उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर दें, राइट? इफ लाइक आई हैव टोल्ड दैट आई डोंट हैव, नो नो मम्मी मेरे पास बहुत पैसे हैं, ऐसे करके, एंड लाइक प्रैक्टिस, एफर्मेशंस, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। अगर मैथ्स में अच्छे नहीं है, तुम तो कभी अच्छा कर ही नहीं सकती, तुम तो स्लो हो, तुम तो ये हो, हम बहुत सारी नेगेटिव चीज बच्चों को बोलते हैं, हमारी आदत है, गुस्से में या कैसे भी, but that's not correct, and try to correct that, even if you've said it's okay। आज अपने बच्चे के साथ आप बैठिए आज, राइट? उनको बोलिए, जो भी नेगेटिव बोला है उसका पॉजिटिव उनको बोलिए, उनको स्टोरीज के थ्रू समझाइए,
सो और वो पूरी ज़िंदगी बच्चे के साथ रहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। सो प्लीज़ कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए बच्चे को। और अगर देखिए कि टीचर्स तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, कि आई नो मेरी डॉटर जो थी शी वाज़ वेरी गुड इन मैथ्स, बट देन शी गॉट अ टीचर हू मेबी आई थिंक टोल्ड हर यू आर नॉट गुड एट मैथ्स एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, एंड देन आई हैड टू एक्चुअली वर्क ऑन दैट, बिकॉज़ वो सिर्फ एक माइंडसेट बन गया कि नहीं मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ। और दो शी इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड, बट वो एक चीज बैठ गई तो बैठ गई, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट, एंड बट देन यू हैव टू चेंज इट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, बट यू हैव टू सी कि स्कूल में या कहीं उनके फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज उनको नहीं बोल रहे हैं जो उनके मन में बैठ गई है, एंड वी हैव टू work and change that through affirmations, through keep on telling them again and again that no, they are good, they can do it. ऑल्सो डू यू थिंक दैट जो भी आपने एफर्मेशन के लिए कहा कि एफर्मेशंस कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं? एब्सोल्युटली, एफर्मेशंस डेफिनेटली हेल्प करती है। और एफर्मेशंस नॉट एफर्मेशन लाइक लाइक हम बड़े लोग करते हैं, लिखते हैं या कुछ करते हैं, दे कैन बी पुट लाइक लंच बॉक्स में आपने डाल दिया, पोस्टर्स लगा दिए। So a lot of things can be done. Just put a song which is like motivating. So affirmations can be in many forms. It shouldn't be like आप कार में ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ कार्ड गेम्स आप खेल रहे हैं, आपने गाड़ी में कुछ सॉन्ग लगा दिया। सो ऑफ कोर्स वी हैव टू बी क्रिएटिव। हम ऐसे उनको बोले कि नहीं चलो अब एफर्मेशंस बैठ के लिखो, आई एम गुड एट मैथ्स, आई मीन दे विल गेट बोर्ड कि क्या है, व्हाट इज दिस एफर्मेशन। एंड चिल्ड्रन बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। सो वी हैव टू उसको बहुत अच्छे से और समझदारी से हमने उनको उनके अंदर उनको बताना है अबाउट एफर्मेशंस बेसिकली। और अगर हम जैसे बच्चों को अ, ये विजुअलाइजेशन वगैरह प्रैक्टिस कराएं, डू यू थिंक कि उससे भी कुछ चेंज हो सकता है? Absolutely. Visualization always help. You can start with small meditations. I mean, why not? I mean, visualization always helps, especially which with children, like especially exams जब आता है बहुत anxiety होती है बच्चों को, तो we can tell them कि close your eyes, visualize, you're doing very good in maths, you're doing very good in exams, आप एग्जाम में बैठे हो और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। I'm sure a child will become very confident after that. राइट, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल आंसर वंस अगेन। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्टिव फेस की बात भी होती है, ये एग्जैक्टली Hmm. क्या है? See, praise can be extremely effective, right? To boost confidence. Praise बहुत, and it should be done in the right way. And trust me, kids know when you're just going through the motions. आप ऐसे बोल रहे हो. If you give a half-hearted good job. अब आप मुझे बोलो दीपशिका गुड जॉब, गुड गुड अच्छा आंसर दिया आपने, मुझे समझ में आ रहा है मैंने अच्छा आंसर नहीं दिया है राइट। और हम्म। नाइस वर्क, आप मुझे से बोलो दीपशिका हाँ नाइस आंसर, I know from your body language, I know from your words that no, maybe मैंने अच्छा आंसर नहीं दिया इस बार, राइट। एंड बच्चों को भी समझ में आता है। बच्चे को आप मतलब वो जैसे गाना है ना, छोटा बच्चा समझ के मुझको, सीरियसली आई मीन बच्चों को समझ में सब आता है। आप फोन देख देख के हाँ बेटा बहुत अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नो, यू हैव टू बी डिस्क्रिप्टिव, यू हैव टू टेल कि बेटा आपने जो कल जब वो आंटी जा रही थी, आपने दरवाज़ा खोला था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो किया। उनको अच्छा लगेगा कि यू आर सेइंग इट विद एग्ज़ाम्पल, एंड यू आर पेइंग अटेंशन छोटी-छोटी चीज़ों का, एंड दे विल फील दे वोंट they'll feel supported, they'll feel encouraged to continue whatever good behavior they are doing, राइट। सो दिस विल रियली व्हेन जैसे कई बार बड़े बात कर रहे होते हैं, बच्चा वहां से चला जाता है, हो सकता है नहीं नहीं मम्मी नानी वगैरह कुछ घर की बात कर रहे हैं, एंड यू टेल देम वाओ दैट्स रियली आई रियली लाइक्ड इट, देन वहां से उठ गए, सो यू गिविंग एन एग्जांपल टू अ चाइल्ड। सो या। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन। Uh, so those who have joined, I just want to tell you that right now we are into the question and answer phase of this session, and Deepshikha ji has shared a lot of things about the mindset to raise confident children. So if you have any question, you want to ask anything, then you can write in the comment box and you will get the answer. Thank you so much. And with this, the next one is like बच्चों की
फीलिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस है? See, feelings बहुत important है. If you want your child to be able to express difficult emotions, which I think is very important, be it frustration, sadness, anger, let them do that. Because कई बार हम बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि लड़का है तो रोना नहीं है. No, let them express their emotion, and that will really make them very confident. And show interest when your child wants to talk about their feelings. Listen to what they have to say. So these things are Right. extremely important. Yeah. Okay. Wonderful. Thank you so much. So we have something from Parnaji, and she says similar thing happened with my elder son. He used to play a fantastic guitar, but his teacher once told him in the school practice session some negative sentences like "you don't have any sense." Mm, that Yeah, happens. he stopped. So now, what you can do as a parent, you tell them no, let him play some guitar. When he's with some family members, or आप खुद उनको बोलो play करो, और बोलो wow, you're playing so well. And maybe that teacher can also say, I mean that these things are small, but then this is extremely important. We're just talking in our education system. We're talking so much about marks and everything, but these life skills are extremely important. And then as I tell, it's not just about children learning them. बच्चों को बोलना नहीं, किसी ने बोल दिया तो कोई बात नहीं, that's okay. But we as teachers, as parents, we need to learn these things, that we have to be very careful when we are talking to our child. Right. Thank you so much. And thank you so much, Parnaji, for sharing your experience. It's really nice. So I appreciate all of you who are sharing your experiences and who are, making the session most interactive. So thank you so much for this. And with this, I have the next one. Like, how can we encourage them to negotiate? And is it important? Yes, but kids, kids are confident when they're able to negotiate getting what they want. उनको जो भी कोई चीजें हैं उनको प्लेटर पे रख के मत दीजिए कि चलो बेटा ये लो. अगर कुछ भी टॉय है, if they're going out, let them fight for it. Like we talk about instant gratification, वो हमें ख़त्म करना है. हर चीज़ स्पेशली व्हेन बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, जिनके हैं वो तो हर चीज़ जो बोला बस देना है. I think we should refrain from that, and sometimes let them make their own judgment. If they have a fight with a kid or anything, let them, it's very important. Or if they want to buy something, let them work, let them sense for themselves that it is it right thing to buy or not. Like yesterday, I'll give you a very nice example. I went with my daughter to a mall, and then it was a very hi-fi kind of store, and things were very costly, of course. So she picked up a toy, and then she just saw the price, and then she said, "No, I think it's too costly." And I really liked it. Let us feel, decide. She took her own. I didn't say costly. I said, "Okay, I'll buy." But then she says, no, let's not. I think we can buy it from somewhere else and it will be less costly, which is very good. The child is learning financial planning, and then learning the importance and the right thing to buy from where. Yeah. Right. Okay, wonderful. Thank you so much. So we have something from Parnaji again about her son. He's playing after so many motivating boosts. He's playing in the group. He's not a child. He is close to Prashanti. Okay. Ah, acha. All right. That's okay. But ma'am, what I tell you that sometimes what happens is that it stays with us even when we become adults. It becomes our limiting beliefs, and then जब भी हम कुछ लाइफ में करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते हैं, because we have been told certain things by somebody कि आप ये नहीं कर पाओगे. तो Yeah. So she says yes. Thank you so much, Parnaji. I really appreciate your interaction. Thank you so much. I'm enjoying it. Keep writing. Keep asking if you have any question, and it's a wonderful one. इसी के साथ दीपशिखा जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन की, माइंडसेट टू रेज अ कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन. तो मतलब एक बच्चे के माइंडसेट को कॉन्फिडेंस जो है, कैसे उसका माइंडसेट उसके कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट कर देता है?
See, mindset is एवरीथिंग, राइट। और जैसे हम आज का हमारा टॉपिक भी है माइंडसेट फॉर पेरेंट्स, तो पेरेंट का माइंडसेट पहले चेंज होना चाहिए और फिर बच्चों का तो अपने आप होगा ही, राइट। And research shows that even young kids can learn to solve simple problems by themselves. So let them do that. Let them have that mindset, right? That I can solve everything. So when they have the correct mindset, I'm sure they'll become very, very, very confident children, right? Yeah. तो मतलब ऐसा ऐसे कौन से साइंस हैं जिनसे हमें पता चले कि बच्चे का कॉन्फिडेंस अभी लो हो रहा है? कैसे पहचाने? Um, See, when the child, बच्चा अगर स्कूल में बोल नहीं रहा है, अगर वो फ्रेंड्स के साथ अपने प्ले नहीं कर रहा है, या वो बहुत अच्छा प्ले कर रहा था अभी उसने स्टॉप कर दिया है, और ऑफ कोर्स मार्क्स आर वन ऑफ द पैरामीटर्स हमारे हमेशा से रहते ही हैं, बट जब अगर वो सोशल सेटअप में जा रहा है एंड देन मे बी अर्लियर ही वाज स्पीकिंग एंड देन नाउ ही इज नॉट स्पीकिंग एंड in class he's not participating, right, or these things are of course some of the parameters, जो, और ये बहुत बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के अंदर। कॉन्फिडेंस अगर नहीं भी है, अगर उसको पता है उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट्स ओके, अप एंड डाउन, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, सबका कॉन्फिडेंस तो ऊपर नीचे होगा ही। इट्स नॉट, वी आर नॉट ऑलवेज एट 100%, बट आपकी सेल्फ स्टीम होनी चाहिए कि ठीक है मैंने इस बार नहीं किया है, मैं अगली बार कर लूंगा। तो बच्चे के अंदर आपको वो एक पेरेंट ही डाल सकता है, वो टीचर्स ही डाल सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा आप अपने बच्चा को बैडमिंटन गेम खेल रहा है या उसका मैथ्स का एग्जाम है वो हमेशा 100% आएगा, हमेशा 90% आएगा, वो 80% आएगा, वो राइट। बैडमिंटन हमेशा अच्छे से ही खेलेगा। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, किसी दिन अच्छा खेला, कभी नहीं खेला। एंड या yeah, there's an urgent need for this generation mindset towards problem solving. Yeah, absolutely, problem solving is extremely important. Yeah. थैंक यू सो मच Parna ji, and thank you so much Deepshika for answering this one. So friends, I have only 2 3 questions. If you have any, you can ask, right? तो जैसे हम पेरेंट्स की बात भी कर रहे हैं कि पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं बच्चों की, तो पेरेंट्स को हम कैसे एनकरेज करें कि बच्चों के अंदर आप इन चीज़ों को लेकर आओ, उसके कॉन्फिडेंस के लिए कुछ करो? हाउ कैन वी एनकरेज देम? क्योंकि वो भी कहीं न कहीं ऐसे बिलीव्स के साथ निकले हैं, जो उनकी जनरेशन, उनसे पहले के जो उनके एंसेस्टर्स थे वो फॉलो करते थे, उन्होंने इस जनरेशन में डाला और ये जनरेशन अपने बच्चों में डाल रही है। तो हम उनको कैसे एनकरेज कर सकते हैं कि जो आप जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वन, सो व्हाई डोंट यू बिकम अ कॉड टू कट दिस व्हाटएवर इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट? Mhm. तो उनको कैसे एनकरेज करें? Right. बहुत अच्छा सवाल हुआ। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, एंड देन आई ऑलवेज से दैट देयर इज नो मैनुअल, पेरेंटिंग का कोई मैनुअल नहीं है कि ये करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है। सब अपने हिसाब से कर रहे हैं और चल रहे हैं। देयर इज नो, हमें कुछ रेफर करने के लिए नहीं मिलता है कि ओके दिस इज अ करिकुलम दैट यू हैव टू फॉलो एंड दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड। कुछ नानी कुछ बोल देती है, दादी कुछ बोल देती है, फ्रेंड्स कुछ बोल देते हैं, एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट, राइट। सी, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप करेक्ट चीज़ें करें। वो ऑफ कोर्स बच्चा जो है वो तो फीडबैक आपको मिल ही रहा है। इफ द चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, सो यू ऑफ कोर्स द पेरेंट गेटिंग अ फीडबैक दैट समवेयर समवेयर कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, राइट। इफ योर चाइल्ड इज बुलिंग अदर चिल्ड्रन, आई थिंक दैट इज अ बिग नो नो। दैट मीन्स दैट कहीं ना कहीं घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। some days, so he's getting that confidence from bullying other, which is like totally no. I know some of my friends as a child who have bullied us, and we all have those kids, who bully us, and that is such a wrong thing to do. So if something that kind of negative is happening, and they need to go, they need to meet teachers, they need to meet his friends who are his friends. And yes, tools, if we talk about like life skills, like I'm talking about life skills, so we have come up with board games, card games. A lot of things are there.
So you can do storytelling is a very very nice way, you know. और Right. मुझे लगता है पेरेंट्स अगर कुछ गलती कर भी दें, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती हम सब करते हैं, एक्सेप्ट दैट कि मैंने तभी किया था ना, वो गलत था, right? So I think that works beautifully, and that talks about you as a parent, as a human being, and child को भी लगता है ठीक है मैं गलती करूंगा, गलती तो देखो करते ही हैं सर, इट्स नॉट दैट वी विल नेवर डू एनी मिस्टेक. So child will also feel that it's okay even if I do, like, I remember a situation. I gave my child lunch box, and then I don't know she's in what mood. She kept that lunch box outside our home, and then she went, and then after 15 minutes I got a message, sorry mama. And that means a lot, it's okay. अब कभी गुस्से में है कुछ कर दिया, because some कभी मैंने उनको सॉरी बोला होगा, तो she knows that I have to say sorry. So that's okay, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but then right values देना बहुत important है. Right. Thank you. Thank you so much once again. So, with this, we have a question from Parnaji. Deepshika, guide with three most required do's and don'ts for young parents and parents to be. See, do's, as I always say, is unconditional love, right? अ, वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, अनकंडीशनल लव देना. आपको कुछ नहीं आता यार, मेरे को नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग, राइट? एज अ पेरेंट आई डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट कीप ऑन, यू नो, when your child अंदर से that love has to be there, right? There's nothing wrong or right, as I told you, but keep on giving that, right? And child, everybody feels, all of us feel, if you are being uh, you're not behaving with me properly, or if you're not, I'm not getting good vibes, so I'll feel that. Similarly, child also feels that, right? Another important thing is stop giving labels. आप तो ऐसे ही हो, आप तो ऐसे ही करते हो, राइट? उसके अलावा keep on giving him छोटे छोटे responsibilities that will make child very very confident, right? uh, don't tell them to minimize feeling. रो मत, गुस्सा मत हो, आप फ्रस्ट्रेट क्यों होते हो, आप सैड क्यों होते हो. I mean, their emotions. Let them feel that. आप उनको इमोशन फील करना मना करा रहे हो, राइट? दैट इज सच अ रॉन्ग थिंग टू डू. डोंट रश टू रेस्क्यू. कुछ छोटा सा प्रॉब्लम हुआ और आपको वहां पे होना ही है, मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा होता हूँ, that is not correct. Let them do mistakes, and then and as you told it, encourage properly, and don't, don't let them again, don't be there for them, all the time, right? So, and encouraging problem solving is very very important, right? As I told you earlier also, one of the authors said that Hmm. kids are confident when they're able to negotiate getting what they want. So let them negotiate sometimes. Okay. Very nice. तो ऐसी कौन सी चीज है, मतलब ऐसा क्या हम कह सकते हैं कि लाइक पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो डैमेज ना हो. Labels. हम जाने अनजाने बच्चों को लेबल्स दे देते हैं. आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, आप ऐसे ही हो, आप तो हो ही ऐसे, आपका भाई देखो कितना अच्छा चल रहा है. कंपैरिजन इज अनदर थिंग. वो देखो कि हम्म. आपका उसके अंकल, रोहन अंकल के बेटे ने कितना अच्छा किया, और आप ऐसे ही हो. आपकी बहन की बेटी ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसा. कंपैरिजन एंड लेबल्स शुड अवॉइडेड, टोटली अवॉइडेड. Every child is different. Wonderful. You cannot compare a apple to a banana, orange to apple, pineapple with pomegranate. You cannot, can you? So how can two human beings or two children can be compared? Not at all, never. राइट. बहुत बढ़िया. तो पाना जी से जजमेंटल एटीट्यूड. या. All right. So with this coming my last question, any final tip for the people who are watching us now and who will be watching us later, so that they can actually help their children to create that mindset that actually brings the confidence in them. Mine is always unconditional love. That is extremely important. Encourage decision making. Let child make बड़े डिसीजन, छोटे डिसीजन, the car you want to buy, the extracurricular, the activity. So let them make,
encourage small decision making, praise effort not just results. As I told earlier also, छोटे छोटे एफर्ट जो बच्चा ले रहा है उसको कीप ऑन प्रेजिंग दैट, नॉट जस्ट कि 90% आए बैडमिंटन में, फर्स्ट आया, नो, छोटी छोटी जो है उनको लेट फॉस्टर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, embrace failures as learning opportunity. Child will fail, we all fail. I have failed so many times, you must have failed so many times, so it's okay, even child can fail. And just because you are giving them the best education, आप उनको सबसे अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, सबसे अच्छे बैडमिंटन कोच उनके लिए लगा रखे हैं, that doesn't mean child is not allowed to fail. Let them fail, cultivate a growth mindset, promote healthy risk taking. Chota chota risk taking is extremely important, whether it's trying a new hobby, speaking up in class, let them do that. And instill effective communication skills, and keep on teaching problem solving skills. Wonderful. Thank you so much with this for the wonderful answer. And now, with this, friends, we are reaching to the end of the session. So, thank you so much, everyone, for joining us today. And I hope आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत insightful सेशन था. And I'm sure that you enjoyed because I enjoyed a lot. Thank you. And we've learned so much from Deepshikha about nurturing a mindset like जो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को empower कर सकता है to grow up with confidence, resilience और self belief, Right. right? So also Deepshikha, thank you so much for sharing your expertise, your strategies and real life insights. बहुत अच्छा लगा. And I'm sure that everyone जो हमें देख रहे हैं अभी will be leaving with valuable takeaways, and they can apply these techniques with their own families or their kids, right? तो जो लोग आप अगर आप दीपिका से कनेक्ट करना चाहते हैं तो once the session will be over, I'll mention her connect contact details in the description so you can connect with her. और आपको कोई भी अगर हेल्प चाहते हैं, कोई भी सपोर्ट चाहते हैं, she is an amazing person, she will help you for that, Thank you. right? And yeah, she shares a lot of practical advice that actually can benefit you. So make sure that you can connect with her if you have any challenge or you want to learn something. And thank you so much once again, Deepshika, for being here and for accepting the proposal, coming here and sharing your insights. Thank you very much for calling me over, Prashad. And I'm sure you are doing wonderful job being a miracle mindset coach. And I'm sure I hope we all of us learned something out of this conversation that we are having for last 1 hour. And thank you very much once again for calling me over. Wonderful. So thank you so much, friends. And it was a wonderful session with you all. Either if you are watching us now or you are watching us later, make sure that आप इस सेशन से जो भी आप सीखते हैं, if you learn something, just mention that in the comments. It will be really great to know that you are still watching this video and you are learning something, because learning never ends. Absolutely. Okay, so with this, thank you so much and stay healthy, take care. I'll see you next week with a new speaker and a new topic. Till then, stay healthy, take care, goodbye and namaste.